Parallelogram means के this is the shape which have opposite parallel sides. Okay, जो opposite sides होंगे अगर वो parallel हैं, जितने भी opposite sides हैं, कोई भी shape हो आपके पास, जितने भी opposite side है वो parallel है, तो it means के that is known as parallelogram. इस shape को देख लो, opposite sides parallel है कि नहीं? So can you tell me, is it parallel? This is one line and this is second. No, Why? because they will eventually meet. Yeah, they will eventually meet. Good. So कोई भी shape हो, okay? Parallelogram means के opposite sides parallel होंगे. It means कि कोई भी shape हो, okay? इस तरह का shape हो या ये shape हो या ये shape हो, if the opposite side is parallel to each other, okay, then that is known as parallelogram. तो इस base और height उसी तरह होगा जिस तरह हमने triangle में लिया था. If this is your base, if you are taking this side as a base, okay, then this will be your height, okay, because your height should be perpendicular to base, okay. So this will be your height. If you are taking this side as your base, then this will be perpendicular, okay, क्योंकि ये 90 degree angle बना रहे हैं, okay. If this is your base, तो इसको perpendicular side ये है, okay, so this will be your height. अच्छा, अब एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला बस आपने याद करना है, ओके, एक ही फार्मूला होगा. वहां पे हम 1/2 करते थे, यहाँ पे आपने 1/2 नहीं करना. एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम क्या करना है? आपने बी एच को मल्टीप्लाई करना है, ओके. दिस इज बेस, तो लाइन परपेंडिकुलर टू दिस बेस इज दिस वन, सो ये आपका बी एच को मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओके. ट्राइंगल में क्या करते थे? ट्राइंगल में हम उसको डिवाइड करते थे, 1/2 टाइम्स वो कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे उस तरह नहीं करना, ओके. Okay, ABCD shape is given to you. AB is 14, BC is 10, and DE is 8 centimeter. So you need to find the area. तो क्या हो जाएगा area? 10 times 14. 10 times 14. Okay, if you say that this is your base. Base and edge should be perpendicular to each other. So if this is your base, 14 and 14 yeah, times 14 8. and 8, yes, क्योंकि 14 and 8 are perpendicular to each other, okay. अच्छा,